वेलकम टू वी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, टॉपिक प्राइसिंग डिसीजन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, सेशन नंबर 7. Topic covered in this session: discuss the three major influence on pricing, costing in pricing for the short run, costing in pricing for the long run, target price and target cost, value added cost, cost incurrence and locked in cost, cost plus pricing. Major influence on pricing decision. Customers influence prices through their effect on demand. देखिए, सबसे पहला जो इन्फ्लुएंस होता है कॉस्ट में वो कस्टमर होता है। कस्टमर अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जितनी ज़्यादा डिमांड होती है प्राइस भी उसी तरह से हाइक हो सकते हैं और हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस प्राइसेस थ्रू देयर एक्शन। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो अपने एक्शन से प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज कॉस्ट इन्फ्लुएंस प्राइसेस बिकॉज दे इफेक्ट सप्लाई। और यदि प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम या ज़्यादा होती है तो उससे भी जो है प्राइसेस पर इफेक्ट पड़ता है, सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है। सप्लाई कम या ज़्यादा हो सकती है। टाइम हॉरिजन ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। अब प्राइसिंग डिसीजन में टाइम का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि शॉर्ट रन डिसीजंस हैव ए टाइम हॉरिजन ऑफ लेस देन ए ईयर। जैसा आप जानते हैं कि 1 साल से कम का समय शॉर्ट रन कहलाता है। प्राइसिंग ए वन टाइम ओनली स्पेशल ऑर्डर, एडजस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स एंड आउटपुट वॉल्यूम। क्योंकि शॉर्ट रन में हम केवल वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं। इसलिए स्पेशल ऑर्डर के प्राइस या प्राइसिंग हम कर सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर। प्रोडक्ट मिक्स को एडजस्ट कर सकते हैं, वेरिएबल इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं। जबकि लॉन्ग रन डिसीजन के अंदर हम जो है मार्केट के सेगमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड सेटअप को चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन डिसीजन इन्वॉल्व एट टाइम हॉरिजन ऑफ ए 1 ईयर और लॉन्गर। 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का टाइम लॉन्ग रन कहलाता है। और उसमें प्राइसिंग ए प्रोडक्ट इन मेजर मार्केट वेयर प्राइस सेटिंग हैज सम लीवेज। किसी भी मार्केट में हम जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है या ज़्यादा टाइम होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से ये टाइम का हॉरिजन। टाइम हॉरिजन ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। नंबर 1, कॉस्ट दैट आर ऑफन इररेलेवेंट फॉर शॉर्ट रन प्राइसिंग डिसीजन। फिक्स कॉस्ट आर ऑफन रेलिवेंट इन द लॉन्ग रन। जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ग रन में जो है फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमेशा शॉर्ट रन में भी बढ़ जाती है। प्रॉफिट मार्जिन्स इन लॉन्ग रन प्राइसिंग डिसीजंस आर ऑफन सेट टू अर्न ए रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉस्टिंग इन प्राइसिंग फॉर द शॉर्ट रन। एन एग्जाम्पल: Lomas Corporation operates a plant with a monthly capacity of
5 lakh cases of tomato sauce. Lomas is presently producing 3 lakh cases per month. Del Valley has asked Lomas that two other companies to bid on supplying 1,50,000 cases each month for the next 4 months. Cost per case is variable manufacturing cost 38 rupees, variable marketing and distribution cost 13, fixed manufacturing cost 14, fixed marketing and distribution cost 15, total cost per unit rupees 80 including fixed cost. If Lomas makes the extra 1,50,000 cases, the existing total fixed manufacturing overheads rupees 42 lakh per month would continue, plus an additional rupees 1,65,000 of fixed overhead will be incurred per month. Total fixed marketing and distribution costs will not change. What price should Lomas bid? Now, रेलिवेंट कॉस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है और इसमें डिसीजन मेकिंग में पहले हमें रेलिवेंट कॉस्ट को कंसीडर करना है जो वेरिएबल होती है, और फिक्स कॉस्ट को या वेरिएबल फिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करेंगे. तो रेलिवेंट कॉस्ट के अंदर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रुपीज़ 38 पर यूनिट, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रुपीज़ 1.10, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट 39.10. और यहाँ पर जो है वेरिएबल कॉस्ट 1,65,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इक्वल टू 1.10, जो एडिशनल कॉस्ट आएगी उसको हमने लिया है. एनी बिड अबव रुपीज़ 39.10 विल इम्प्रूव लोमस प्रॉफिटेबिलिटी इन द शॉर्ट रन. Suppose that Lomas believes that Del Valley will sell the tomato sauce in Lomas' current markets but at a lower price than Lomas. Relevant cost of the bidding decision should include revenues lost on sales to existing customers. Latisha Computer Corporation manufactures two brands of computers, simple computers and complex computer. Latisha uses a long run time horizon to price complex computer. Direct material cost vary with the number of unit produced. Direct manufacturing labor cost varies with the direct manufacturing labor hours. Ordering and receiving, testing and inspection and rework cost vary with their chosen cost drivers. So, ordering rupees 78 per order, testing rupees 2 per inspection hours, rework rupees 38 per unit reworked, cost per unit, direct material cost 450, direct labor cost 3.50 hours at the rate of 19 per hour, which is equal to 66.50 per unit. So total variable cost rupees 516.50. Number of order placed 17,000. Number of testing hours 30 lakhs, and number of unit reworked 8,000. So the direct fixed cost of machines used exclusively for the manufacturer of complex computer total rupees 70 lakh. What is the cost of producing 1 lakh units of complex computer? Now, direct material and labor cost ₹51 lakh, $65,000. Direct fixed cost
70 lakh. Ordering 17,000 multiply 78, 13 lakh 26,000. Testing 30 lakh multiply to 60 lakh. Rework 8,000 multiply 38, which is equal to 3 lakh 4,000. Total cost 6 crore 62,000, 6 crore 62 lakh 80,000. And per unit cost 6 crore 62 lakh 80,000 divided by 1 lakh unit, which is equal to 662.80 per unit. Alternative long run pricing approach, मार्केट बेस्ड एंड कॉस्ट बेस्ड. देखिए, दो तरह की अप्रोच होती है हमारी, किस तरह से हम प्राइसिंग करें. पहली अप्रोच जो है मार्केट बेस्ड मीन्स जो प्राइसिंग आपके मार्केट में उस तरह के प्रोडक्ट के चल रहे होते हैं वो आपका मार्केट बेस्ड प्राइसिंग कहलाता है या मार्केट बेस्ड प्राइसिंग अप्रोच कहलाती है. और दूसरी अप्रोच आपकी कॉस्ट बेस्ड होती है कि जितना भी टोटल कॉस्ट आपकी आती है, जिसको हम कॉस्ट प्लस मार्जिन कहते हैं, जितनी कॉस्ट आती है उस सब कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं और उसके ऊपर जो मार्जिन हमें चार्ज करना है उसको चार्ज कर लेते हैं, इसलिए हम इसको कॉस्ट प्लस कहते हैं. तो ये दो तरह की अप्रोच हमारी अल्टरनेटिव अप्रोच होती है, लेकिन ये अप्रोच केवल लॉन्ग रन में हम यूज करते हैं. टारगेट प्राइस एंड टारगेट कॉस्ट. टारगेट प्राइस इज द एस्टिमेटेड प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट पोटेंशियल कस्टमर्स विल बी बिलिंग टू पे. एक ऐसा प्राइस जिसका हमने एस्टिमेट किया है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कि इस प्रोडक्ट को ये कस्टमर, यानी एक सेगमेंट हमने बनाया कस्टमर का कि ये कस्टमर ईजिली परचेज कर सकते हैं, दे आर विलिंग टू पे, कि ये जो है आराम से पे कर सकते हैं, वो आपका टारगेट प्राइस होता है. टारगेट प्राइस, टारगेट ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट, टारगेट प्राइस माइनस टारगेट ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट इक्वल टू टारगेट कॉस्ट पर यूनिट. Steps in developing target prices and target cost. Number 1, develop a product that satisfies the needs of potential customers. Number 2, choose a target price. Number 3, drive a target cost per unit. Number 4, perform value engineering to achieve target cost. Now implementing target pricing and target costing. Latisha's management want a 15% target operating income on sales revenue of CC. Target sales revenue is rupees 750 per unit. What is the target cost per unit? The target cost can be calculated by using this one. Rupees 750 multiply 15%, which is equal to rupees 112.50, and target cost equal to rupees 750 minus 112.50, which is equal to 637.50 per unit. Current full cost per unit of CC is rupees 662.80. The value engineering is a systematic evaluation of all aspects of the value chain business function with the objective of reducing cost. Now, value added cost. A value added cost is a cost that customers perceives as adding value or utility to a product or services. Adequate memory, preloaded software, reliability, easy to use keyboard, etc.
These are the value added services and they associate various kinds of cost. Non value added cost. A non value added cost is a cost that customers do not perceive as adding value or utility or to a product or services. For example, cost of expediting, rework, repairs, etc. हम ये कह सकते हैं कि नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट उस तरह की कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट के चार्ज करने से एसेट्स या प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो बढ़ती है, ना कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई फीचर कोई नहीं बढ़ता हो, केवल उसकी लाइफ या उसको स्टेबल लाइफ में जिस कॉस्ट के थ्रू हम बदल देते हैं वो नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट कहलाती है. कॉस्ट इनकरेंस. दिस डिस्क्राइब्स when a resource is sacrificed or foregone to meet a specific objectives like research and development, manufacturing, distribution, design, marketing, customer support, etc. These are the cost incurrence. Locked in cost. These are those costs that have not yet been incurred but which based on decisions that have already been made will be incurred in the future or designed in cost. It is difficult to alter or reduce costs that are already locked in. ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब कॉस्ट पहले लॉक्ड हो जाती है तो उसको अल्टर करें या उसको कम करें, क्योंकि लॉक्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी स्पेंट द अमाउंट, आप पहले से ही उस अमाउंट को खर्च कर चुके हैं, अब उसको वापस कैसे लाया जाए, किस तरह से उसे रिड्यूस किया जाए. तो इस तरह की कोई भी कॉस्ट जो ऑलरेडी लॉक्ड हो जाती है उसे हम लॉक्ड इन कॉस्ट कहते हैं. कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट इनकरेंस एंड लॉक्ड इन कॉस्ट. देखिए इस तरह से आपका कम्युलेटिव कॉस्ट पर यूनिट गिवन इन वाई एक्सिस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ कॉस्ट गिवन इन एक्स एक्सिस लाइक R&D एंड डिजाइन. स्टार्टिंग में जो इनिशियल कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती है. R&D के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज आर सेकेंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. देन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और कस्टमर सर्विस कॉस्ट ये आपकी लास्ट की कॉस्ट होती है और ये तीनों वैल्यू चेन फंक्शंस के अंदर आते हैं. इसके बाद सबसे हाईएस्ट कॉस्ट कौन सी होती है, किस तरह से होती है. अब यहाँ पर R&D के बाद में आप देखेंगे कि रेड लाइन जो है वो कॉस्ट इनकरेंस कर्व को डिनोट करती है एंड ब्लू लाइन आपकी लॉक्ड इन कॉस्ट कर्व को डिनोट करती है. तो स्टार्टिंग में जब R&D आप करते हैं तो लॉक कॉस्ट का रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि R&D एंड डिजाइन में अनसर्टेनिटी होती है और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा कस्टमर के द्वारा, इस चीज़ का हमें डाउट रहता है और उसके चलते जो है ये हाईएस्ट होती है. मैन्युफैक्चरिंग में आप देखेंगे कि ये लगभग रूप से अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल की फॉर्म में आ जाती है कि जैसे जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करते चले जाते हैं लॉक्ड इन कॉस्ट कर्व जो है हाइक नहीं होता ज़्यादा. और उसके बाद जब मार्केटिंग होती है तो मार्केटिंग में ये स्टेबल हो जाता है और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो ये लॉक्ड कॉस्ट जो है आगे चली जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जो कॉस्ट आप कस्टमर सर्विस या डिस्ट्रीब्यूशन में देते हैं वो जो है अब आप बियर नहीं कर पाएंगे या उसको जो है रिकवर नहीं कर पाते हम, इसलिए ये ऊपर चली जाती है. Cost incurrence and locked in cost. At the end of the design stage, direct materials, direct manufacturing labor and many manufacturing, marketing, distribution and customer service
costs are all locked in. Cost incurrence and locked in cost: when a sizable fraction of the cost are locked in at the design stage, the focus of value engineering is on making innovations and modifying designs at the product design stage. Cost plus pricing. The general formula for setting a cost based price is to add a markup कंपोनेंट टू द कॉस्ट बेस. जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है, हम पहले टोटल कॉस्ट को ऐड करते हैं और उसमें अपना मार्कअप या मार्जिन ऐड कर देते हैं और उससे जो भी कैलकुलेट होकर के आता है वो आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कॉस्ट बेस और बेसिक कॉस्ट इक्वल टू ₹X एंड मार्कअप पर कंपोनेंट Y, देन prospective selling price X plus Y. Let us an example. Assume that Latisa's engineering have redesigned CC into CCI at a new cost of ₹637.50. The company desires a 20% markup on the full unit cost. What is the prospective selling price? अब देखिए इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. कॉस्ट बेस 637.50, मार्कअप कंपोनेंट 637.50 मल्टीप्लाई 20% विच इज इक्वल टू 127.50. सो प्रोस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस इक्वल टू 637.50 प्लस 127.50 विच इज इक्वल टू 765. Assume that the capital investment needed for CCI is ₹75 million and the company pre-tax target rate of return on investment is 17%. What is the target annual operating income that Latisa needs to earn from CCI? Which can be calculated as 75 million multiply 17%, which is equal to 1,27,50,000. Now cost plus pricing. What is the target operating income per unit? 1,27,50,000 divided by 1 lakh units, which is equal to 127.50 per unit. The 17% target rate of return on investment expresses the company's expected annual operating income as a percentage of investment. The 20% markup expresses operating income per unit as a percentage of the full product cost per unit. Now advantage of using full cost. Number 1, full recovery of all cost of the product. प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट की रिकवरी हो जाती है, प्राइस स्टेबिलिटी होती है और तीसरी चीज़ जो है वो सिंपलिसिटी है कि यू कैन डिटरमाइन इट ईजिली, आसानी से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ अल्टरनेटिव कॉस्ट प्लस मेथड. अल्टरनेटिव कॉस्ट के अंदर अदर मेथड्स लाइक वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेथड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मेथड, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस कॉस्ट. Now, life cycle budgeting. The product life cycle spans the time from original research and development through sales to when customer support is no longer offered for that product. A life cycle budget estimates revenues and cost of a product over its entire life. And now, features that make life cycle budgeting important. ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे लाइफ साइकिल बजटिंग इंपॉर्टेंट होती है? सबसे पहले नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट.
कि प्रोडक्शन होता नहीं है लेकिन फिर भी कॉस्ट हमारी चार्ज होती रहती है। सेकेंड इज डेवलपमेंट पीरियड फॉर R&D एंड डिजाइन, और वो समय, वो टाइम जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसकी कॉस्ट। एंड अदर प्रीडिक्टेड कॉस्ट, और इनके अलावा दूसरी प्रीडिक्टेड कॉस्ट या फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट जो होती हैं, उन सब को हम पहले से लाइफ साइकिल बजट के अंदर ऐड करके लेते हैं। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर लेस विजिबल on a product by product basis. When non-production costs are significant, identifying these costs by product is essential for target pricing, target costing, value engineering and cost management. Development periods, when a high percentage of total life cycle costs are incurred before any production begins and before any revenues are received, it is crucial for the company to have as accurate a set of revenue and cost predictions for the product as possible. अब प्रिडिक्टेड कॉस्ट क्या होती है? Many of the production, marketing, distribution and customer services costs are locked in during the R&D and design stage, that is known as predicted cost. Life cycle budgeting facilitates value engineering at the design stage before costs are locked in. Consider a life cycle average sales price of rupees 55,000 per unit. If the desired life cycle contributions is 45%, what is the allowable cost over the life cycle of the products? Rupees 55,000 divided by 55,000 multiply 45%, which is equal to rupees 30,250. Other consideration in pricing decision like price discrimination, that means भेदभाव, कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को या किसी एक कस्टमर को किसी और रेट में देते हैं, अदर कस्टमर को दूसरे रेट में देते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट इज पीक लोड प्राइसिंग, कि जब हमारे पास लोड होता है या ज़्यादा डिमांड होती है हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करें, और जब डिमांड कम होती है तो कम प्राइस चार्ज करें। तो इस तरह की दो अलग अलग स्ट्रेटेजी होती हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लॉ, under the US Robinson-Patman Act, a manufacturer cannot price discriminate between two customers if the intent is to lessen or prevent competition for customers. Price discrimination law, they apply to manufacturers, not service providers. Price discrimination is a permissible if differences in the prices can be justified by differences in cost. Predatory pricing occurs when the predator company charges a price that is below an appropriate measure of its cost, and the predator company has a reasonable prospect of recovering in the future the money it lost by pricing below cost. Most courts in the United States have defined the appropriate measures of cost as the short-run marginal and average variable cost. Price discrimination law, dumping occurs when a non-US company sells a product in the United States at a price below the market value in the country of its creation, and its action injures an industry in the United States. और ये केवल यूनाइटेड स्टेट की प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि सभी स्टेट्स की प्रॉब्लम होती है कि जब कोई भी कंपनी, नेशंस लाइक इंडिया, हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है कि जब कोई भी कंपनी रेजिडेंशियल कंपनी से बिलो प्राइस पर सेम प्रोडक्ट को सेल करती है
तो उसको हम डंपिंग कहते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ एक एंटी डंपिंग लॉ भी बना था, जो आजकल नहीं है। और एंटी डंपिंग लॉ में क्या था कि हम जो है अपने नेशनल जो कंपनीज हैं उनके हित की रक्षा करने के लिए उसे हमने जो है तैयार किया था, बनाया था। तो उस चीज़ को जो है वो भी एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही पार्ट होता है। And now collusive pricing occurs when companies in an industry conspire in their pricing and output decisions to achieve a price above the competitive price. And now do it yourself. What is life cycle budgeting? How it is important? And question number 2, what is cost plus pricing? And that's it from session number 7. Thank you.